Give me just 1 second, everyone. So now, yesterday when we started the topic, so we have started with the tools from here. I'll just mark what all tools we have done yesterday. So we started with the selection tool and the direct selection tool. Selection tool is basically used to select something and direct selection tool is used to edit something. Then we have the shape tools, like these are the some of the shape tools. After the shape tool, then we have done the brush tool, type tool to write something, eraser tool to erase something. Then we have done the shaper tool to draw the basic shapes. Then we discuss about the gradient tool and the mesh tool. These were the tool what we started yesterday. And eyedropper tool as well to pick the colors. Now today, first tool we are starting here, that is a pen tool. This is the most important tool in the software. And this tool is basically used to draw something. अगर आपको कुछ भी draw करना है, तो हम हमेशा pen tool से ही draw करने वाले हैं. So we can go to the pen tool here. Using a pen tool, you have to just click once. If you just click, just do a single click. So you will get a dot here. अगर आप कहीं पे भी like single click करोगे pen tool से, आपको ना एक dot मिल जाएगी. You will basically get a dot. अगर आप दोबारा से click कर दोगे, you will just click again, you will get a straight line. Okay. And if, for example, you click it again, wherever you want, so you will get a straight line. And if you click again, you will get one more straight line. If you click again, you will get one more straight line. If you click again, you will get one more straight line. And if you click on the point from where you have started with the shape, so this will become a closed shape like this. When this is a closed shape here, you can actually fill the color from the property bar or from the control panel. So that's how the shape tool works. And this is a basic shape tool which we can use to basically draw the simple shapes. After the pen tool is done, then the next tool we have here, that is making the curves with the pen tool. Pen tool the same here, but in this we can do two things. One is a straight line. Second is about the curves. You go to pen tool here. Now if you just click once, so you will get a dot. अगर आप दोबारा से क्लिक करोगे जस्ट, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. आप दोबारा से क्लिक करोगे तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. बट अगर आपको कर्व्स क्रिएट करना है, तो आपको दोबारा से क्लिक करना होता है, होल्ड करना है और ड्रैग करना है, तो आपको कर्व मिल जाएगा. यू विल जस्ट क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग. यू विल जस्ट क्लिक, होल्ड एंड ड्रैग. आपको एक बार क्लिक करना है, होल्ड करना है और ड्रैग करना है, तो आपको कर्व मिल जाएगा. एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ. आपने पेन टूल को स्टार्ट किया, ए पॉइंट, बी पॉइंट, होल्ड किया और ड्रैग किया, सो आपको कर्व मिल जाएगा. आप क्लिक करोगे, होल्ड करोगे और ड्रैग करोगे, तो आपको कर्व मिल जाएगा. This is how we can basically make the curve with the pen tool. I will just give you 5 minutes in between to try the pen tool because pen tool हमारा सबसे important tool है. See, अगर हमने एक पॉइंट से स्टार्ट किया, दूसरे पॉइंट पे गए, यहाँ पे हमने होल्ड किया और ड्रैग कर दिया, तो हमें एक कर्व मिल जाएगा. दूसरा कर्व बनाने से पहले हम लोग इस अगर सेंटर पॉइंट पे जस्ट क्लिक कर देंगे, तो हमारा हैंडल रिमूव हो जाता है, तो हम परफेक्ट कर्व बना सकते हैं. So you can just click on the center point, so your handle will be removed. You can just click, hold and drag to make a perfect curve. अगर आपको perfect curves बनाने हैं, तो आपको बस center point पे click करना होता है, आपका handle remove हो जाएगा. You can just click, hold and drag. तो इस step से आप curves create कर सकते हैं. Okay. आपको ये पेन टूल को फटाफट से एक बार ट्राई कर लेना कि हाउ दिस पेन टूल इज वर्किंग. अगर किसी बच्चे के पास अभी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, तो देयर इज अ गेम हियर ऑन गूगल. यू जस्ट सर्च बेजियर गेम. ओके, और या तो आप सर्च कर लो पेन टूल के. सो दिस बेजियर गेम इज देयर, सो यू कैन जस्ट ट्राई द पेन टूल फ्रॉम हियर. ओके, सो एक बार आप ये पेन टूल को क्विकली जस्ट प्रैक्टिस इट वंस.